Hello, everyone. I just thought I'll share my thoughts on what's happening in Delhi right now, the CJP protest. What is happening? I see mostly two kinds of views. One are completely on the CJP side, saying these protests are peaceful, and some are saying that these protests are extremely violent, and what government is doing with them is right. And some are saying that these are very peaceful protests, and government is very fascist, this and that, right? So I'll just share my two thoughts about it. I feel that you cannot, like, at least I do not have extreme view on either side, right? Has a mistake happened? Obviously. Has BJP been wrong? Absolutely, right? And even the most staunch BJP supporters that I know are not saying that, okay, no leak has happened or it is not the fault of the yeah, minister, of the education minister, Dharmendra Pradhan. Everybody is accepting that a fault has happened, right? Now it comes to the protests, how the protests are happening. What I find funny is, मुझे जो funny लगता है कि वही लोग जो मोदी सपोर्टर्स को, बीजेपी के सपोर्टर्स को अंधभक्त बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो ब्लाइंडली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी को तो बोलते हैं कि ये बहुत खराब है और फलाना है ढिमकाना है। दे एब्सोल्युटली फेल टू एक्नॉलेज द गुड वर्क डन बाय बीजेपी एंड मोदीज गवर्नमेंट, and completely side by as if Sonam Wangchuk is God sent and there's absolute no fault of his, right? Like they cannot accept. आप उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश भी करो, they do not accept that someone like Sonam Wangchuk can have fault, right? So they call others अंधभक्त. तो अभी तो वही कर रहे हो, अभी तो अंधभक्ति कर रहे हो. Is Sonam Wangchuk absolutely black or absolutely white? I don't think so, right? Like, has he done some good work? Yes, he has done some good work, but is he God sent? Is he absolutely the perfect person? Obviously not, right? Like, there's not even a single patent in his name. There are huge issues with how the land allotment happened to him, how he has not got his university recognized. And there are a lot of controversies around, which are valid controversies around Sonam Wangchuk, and a lot of cases are filed against him under Congress government, right? So that's about Sonam Wangchuk, right? So, and he's absolutely bad? No, he must have done some good work. But that doesn't mean that you're all good, right? Like you do some little good work doesn't mean that you can do bad work somewhere else. So that's that. And again, people will call me अंधभक्त कि आप बीजेपी को support करो, सोनम वांगचुक के बारे में ऐसे बोल रहे हो. I'm just stating facts, right? Where has been BJP at fault? BJP has been at fault how they have handled the situation, right? The education system was not destroyed BJP. It has always been bad, and that one field is where BJP has failed completely, right? Like they have improved the infrastructure, they put in AIMS, they have incorporated more universities. But when it comes to primary education, I don't see any good work happening there. So that is where BJP has completely failed. While the NEET paper leak did not happen at the ministry level, it happened at the ground level, and those people have been arrested. But still, Dharmendra Pradhan should have taken responsibility and at least acknowledge his fault. I'm not saying whether he should have resigned or not. At least he should have accepted his fault. He should have taken responsibility and said and assured people that yes, there'll be no leaks. Further from now, they're going to make the system more robust and make it less leak prone. Like that is what they should have done. They didn't. They failed at that. They completely failed at that. The second fault which happened was the CBSE thing, which happened somewhere in February and all, and at that time itself, he should have taken responsibility. So clearly, there had been a lot of faults at Dharmendra Pradhan's end, and he should have probably resigned, but he didn't, right? So obviously, he should be held responsible. However, what happens is, सपोज आपके घर में कुछ गड़बड़ी हुई है, राइट? आपके ब्रदर ने कुछ खराब किया है, एंड यू एक्सेप्ट कि बस अब तुम ये काम नहीं करोगे, तुमने गड़बड़ किया. बट इफ द एंटायर मोहल्ला कम्स एंड स्टैंड एट योर डोर एंड दे से दैट हैंड ओवर योर ब्रदर टू अस एंड वील मेक द डिसीजन, और यू डू दिस, यू थ्रो योर ब्रदर आउट ऑफ द हाउस, you won't do that anymore. अब आप इसको पॉलिटिक्स को, गुड पॉलिटिक्स को, बैड पॉलिटिक्स को, that's a fact, right? Like that's a fact that as soon as the pressure builds up on a government to take an action,
the government has to take a step back and say, no, we will not do it under your pressure, right? So I think that is what happened initially. They were like, okay, now that since there's so much pressure on us to do that, and if we give in to the pressure, we'll seem weak. So that's why BJP didn't do. The second fault of BJP happened after this, right? Like this is the politics which happened. Now, when the protest started and they were still quite peaceful, yes, there were some stupid slogans here and there, but technically they were peaceful. There was no violence per se. Either the BJP government should have engaged in dialogue with them at that moment. Now, when the violence happened at Jantar Mantar, right, when stones were thrown at police people and police had to defend themselves, and some innocent people also might have gotten hurt. So when the violence happened on both sides, right, like and people got hurt on both sides, that is when they engage in a dialogue with these people. First of all, they have no credibility. Like, who is CJP? Why are you engaging in dialogue with them, right? Maybe you could have chosen members of parliament and MLAs who were supporting these people to engage in dialogue with, because they're chosen by people. Even if they're from the other party, they're chosen by people. Who is CJP? Anyways, since they were representing the movement, you engage with CJP. Why after the violence happened? Why not before? Right? So that is where you kind of lose us people who are being BJP voters. That who is making a strategy? Right? Who is making a strategy? तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा fault हुआ है. Now let's talk about violence. A friend of mine, a close friend of mine, he's been sharing, यार ये देखो लड़कियों को मार रहे हैं, कर रहे हैं. Am I saying that no innocent person got hit by police? No, I'm not saying that. But I'm not sure whether they're innocent or not. जिसकी वीडियो शेयर हो रही हैं, because there are videos where a person is being mishandled by the police, and people are spreading it that listen how violent this police is. That was a peaceful protest. But another video came out a little later where it showed that that person was throwing pepper spray at the police personnel. Similarly, some girl getting hit by just one danda of police. Later on, a video came that she was abusing policemen in their face. So, peaceful protest तो definitely नहीं है. Are there some people or organic crowd there? Maybe 10%. I don't think so. There are more than 10% who are organic, who are peaceful, who want a good solution for this, who are really there for students. मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा population नहीं है. Not more than 10% of such people are there. Rest 90% are just there to again likes Superman costume पहन के जा रहे हैं, उनको केवल ड्रामा करना है, right? Like 90% of there are just to see the drama or do drama to get some likes on their Instagram posts, etc. Right? 90% तो वही हैं, and it includes these 90% includes people like influencers, etc. and politicians, etc. who obviously have a vested interest on being against BJP. So 90% तो वो है. जब 10% वो जा रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है. देखिए, यू माइट बी एट द योर थॉट प्रोसेस माइट बी राइट. आप वाकई में स्टूडेंट्स के लिए जा रहे हो वहाँ पे, बट एक चीज़ आप रिमेंबर करना, यू रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नो वन थिंग. आप अपने आप को ना पुलिस की तरफ रख के देखो, राइट? यू स्टैंडिंग देयर, रेन हो रही है, इतनी धूप है, कहीं पे कुछ है, एंड यू सी मे बी यू नॉट गॉट हिट, बट आप देख रहे हो आपके साथ में जो आपके साथी उन पे पत्थर पड़ रहे हैं, आप जस्ट पत्थर से बचे हो, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी कि पत्थर कहाँ से आया, किसने फेंका वो पत्थर. जब व्हेन दे विल रिटेलिएट, एंड दे हैव द एंटायर राइट टू रिटेलिएट. अगर सामने से पत्थर आएगा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ CRPF जवान, आई हैव द फुल राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, ऑल्सो हैव ह्यूमन राइट्स, राइट? इफ आई स्टार्ट हिटिंग, जो सामने आएगा उसको पड़ेगा. लाइक दिस इज नेचुरल ऑर्डर, राइट? आप उनके आंखों में कोई AI नहीं लगा हुआ है कि यार यहाँ से पत्थर आया था, राइट? जो सामने आएगा वो पड़ेगा. अब होता क्या है, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, जो वहाँ पे जेन्युइनली गए हैं, जो प्रोबेबली नॉन वायलेंट हैं, राइट, इनको आगे पुश किया जाता है क्योंकि वो थोड़े सीधे हैं, वो दिल से थोड़े सीधे होते हैं. और ये जो बैड एलिमेंट्स रहते हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और वहाँ पे हैं भी नहीं, दीपिका को एक भी डंडा पड़ा नहीं पड़ा. एक वो बर्गर वाला, एक बर्गर बॉय है, वो क्या नाम है उसका, जो भी है, जो कल नाच रहा था स्टेज पे, ही इज़ नॉट देयर, राइट? सो जितने भी सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये प्रकाश राज, राइट, ही इज़ क्वाइट अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, व्हाई इज ही नॉट देयर? डू यू थिंक प्रकाश राज अगर आगे खड़ा होता
आई थिंक ही इज़ ऑल्सो MLA और MP फ्रॉम सम पार्टी। अगर वो आगे खड़ा होता, आपको लगता है कि उसको रिकग्नाइज करके पुलिस एकदम से डंडा मारती? नहीं मारती। अरविंद केजरीवाल वहाँ गया, अतिशी मार्लिना वहाँ गई, लाइक अतिशी मार्लिना तो सिटिंग MLA है। वाई वॉज शी नॉट लीडिंग द प्रोटेस्ट? अब मानो ना मानो, पुलिस एक बार को 4 बार सोचेगी एक सिटिंग MLA पे डंडा चलाने से पहले, बट वाई आर दे नॉट लीडिंग द प्रोटेस्ट? ये आप उनसे पूछो सवाल। जब सब कुछ था, स्टेज पे लाइक्स चाहिए थे, वो चाहिए था, सोनम वांगचुक जी को पानी पिलाना था, तब तक तो वो आ रहे थे। अब बच्चों को आपने आगे कर दिया है डंडे खाने के लिए। तो बच्चों को मैं ये कहूँगा, टू ऑल द स्टूडेंट्स, यंग और लाइक ओल्डर पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस एंड आर जेन्युइनली क्लियर एट हार्ट, वही मत पड़ो इनके चक्कर में, राइट? आपको प्रोटेस्ट करना है, यू कैन राइट लेटर्स टू द मिनिस्ट्री। आप 2000, 10,000, 50,000 लेटर लिखो, प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे, राइट? प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। आप लिखो, साहब मैं आपको लिए वोट नहीं करने वाला हूँ, राइट? प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। बट अगर आप वहाँ पे जाते हो, राइट, तो और आप पे डंडा पड़ता है तो आपको चोट लगेगी, आपका फेस, अब उन्होंने कैमरे लगा लिए, अब आपको गलत चीज़ हो रही है। भाई दुनिया में हर जगह होता है ये, यू नो दिस, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब अगर आप भी गवर्नमेंट के बैठे हो गए ना, आप भी यही करोगे, यू रिकग्नाइज पीपल हु आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड उनके अगेंस्ट केसेस होंगे। यू कैन कॉल इट राइट, यू कैन कॉल इट रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्ट्रॉय योर करियर। तो प्लीज़ आप आगे मत जाइए, आप वहाँ पे फ्रंट फुट पे मत खेलिए। जो ये लीडर्स पुश कर रहे हैं उनको आप फ्रंट फुट पे डालिए, आप पीछे खड़े रहिए अगर जाना भी है तो, राइट? आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, राइट? एंड मैं 2 बार मैं वहाँ गया था। आई वॉज वर्किंग शाम को 5:30-6 बजे, एंड मैं गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टिंग कर रहा था। उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी बाइक पे मैं स्टिकर लगा के और गाड़ी पे स्टिकर लगा के रखता था, इफ स्टैंडिंग अगेंस्ट करप्शन इज इलीगल, अरेस्ट मी। और ये मैं गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ये पोस्टर लगा के मैं अपनी गाड़ी और बाइक पार्क करता था। नथिंग हैपेंड, राइट? दिस वाज कांग्रेस टाइम। व्हाई? बिकॉज इट पीसफुल, आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। IAC मोस्टली पीसफुल, पूरा पीसफुल था। लाइक आई वेंट ट्वाइस टू इंडिया गेट टू पार्टिसिपेट इन दीज प्रोटेस्ट। दैट वाज अ प्योर ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। अब उससे अगर हम कंपेयर करें तो later on what happened with Kejriwal, with Prashant Bhushan, the entire party is different, right? But लेकिन उस समय, if you look at that perspective, at that point, these people came with a lot of credibility, right? Arvind Kejriwal, later on he turned, but at that time he was an ex-IRS officer, he was from IT, he had some credibility, he had worked in the private sector, and वो जो बातें करते थे उस समय, it was very different how it turned out later, but at least at that time you were convinced कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं, right? There were no anti-national, slogans against it. There were slogans only against corruption. There were no anti-Hindu slogans. जो सब इस CJP प्रोटेस्ट में हो रहा है, they are anti-national slogans, they are anti-Hindu slogans being spoken at this protest. तो इसलिए इस प्रोटेस्ट को मेरा कोई सपोर्ट नहीं है. I was there for IAC support because it was organic. उसमें कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह तो तब थे भी नहीं 2011-12 में, तो उस समय कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे जो वहाँ जा रहे थे, एंड इट वाज ऑल पीपल. मैंने देखा था, गाय इन ऑल्टो हैड कम विद लाइक hundreds and hundreds of small water bottles and distributing them. He was not rich guy, right? He had an Alto, but still he spent his own money and distributing free water. जो यहाँ पे भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ जेन्युइन लोग नहीं हैं, जेन्युइन लोग, but 90% are not genuine. वहाँ पे 90% genuine थे. So that is the difference, guys. Please don't go through this protest. If my voice reaches to the young students, please do not participate in this charade, right? This is a complete political movement being funded by anti-government and anti-national, anti-Hindu people. I'm very sure of that, because considering the kind of slogans being spoken, IAC के टाइम पे गाली नहीं दी थी किसी ने, right? We spoken against द करप्शन. कांग्रेस के मिनिस्टर्स को करप्ट बोला गया था, गाली नहीं दी थी, जैसे अभी माँ बहन की गाली दी जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को. इसने इस तरह से गंदी गाली नहीं दी थी उस समय, इस समय गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, राइट? सो दे शुड स्टॉप प्लेइंग वेरी गुड कि भाई हम बहुत अच्छे हैं और ये है एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट. ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट पीपल, 90% पीपल देयर आर वायलेंट, uncouth people. And all I'll say is don't participate in this.